यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी फ्रूटफुल मीटिंग थी इंडो कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स में। मज़ा आता है काम करने में ऐसे ना, एनर्जी के साथ। यहाँ पे लोगों को हेल्दी खाने का समझ नहीं आता। अरे भाई कोई भी रेगुलर जगह में मैं बोल दूं हेल्दी, घबरा ही जाते हैं। कैलोरीज मतलब एक मील में 800-900 कैलोरी, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बहुत खाते हैं यार अनहेल्दी के, हम ऐसे ही हिंदुस्तानियों को बदनाम किया हुआ। अब मैंने यहाँ पे चेक्स में भी जब ऐसे बोला कि आई डोंट सी एनीथिंग हेल्दी, कहने है ना ये फॉर टेस्ट नाइस। कुड़ी तो अपनी लगती सी, एक्सेंट मारे सी ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। Very good friend, Supreet, eh? Make sure you know this guy. ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ठीक सी, हाँ ठंडी हो गई। रिंग तक जा रहा हूँ, 1 घंटा 4 मिनट है यहाँ से। मुझे वो ट्रेन वाला काम बहुत सही है यहाँ पे। हेलो जी, अभी मेरी यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी फ्रूटफुल मीटिंग थी इंडो कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स में। तो यहाँ की मैं एक्चुअली इनके साथ टेक्निकली हमारी सेकेंड डे मीटिंग होनी थी और डेलीगेशन के पार्ट से, तो मैं डेलीगेशन के साथ आता, तो इनसे मैं पहले भी जुड़ चुका हूँ, मिल चुका हूँ। तो वेरी नाइस पीपल, वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। और अपने अगर इंडियंस बाहर मिलते हैं, इंडिया के बाहर, खास कनाडा में, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग जो सक्सेसफुल है और जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो कई चीज़ें पता चली हैं, देखो फ़र्क तो पड़ गया है, इमिग्रेशन में भी, स्टूडेंट इनटेक पे भी, वो भी फ़र्क पड़ गया है। इफेक्ट तो है, इकोनॉमी काफ़ी हुई है, बट आई सी अपॉर्चुनिटी इन मल्टीपल थिंग्स। एक प्लस पीएचडी चेंबर और ICCC भी इकट्ठे कैसे जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ आयुर्वेदा या आयुष को कैसे यहाँ प्रमोट किया जा सकता है, कई चीज़ों पे डिस्कशंस हुई हैं। डॉक्टर इंदिरा से भी जब मैं मिला तो वो काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से हील करते हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ पे होते हैं। बढ़िया है, ऐसे ही अच्छा लगता है, लोगों से, नए लोगों से मिलो, नया सीखने को मिलता है और ऐसे ही कारवां बढ़ता चलता है। तो एंड ये इन्होंने पेन लगाया है, एंड 1 मिनट देखते हैं कैब आ गई या नहीं। 3 मिनट दूर है कैब, ये हाँ पास ही है। ये गाड़ी का नंबर पे नहीं दिखा रहा। हाँ आ गया, 145। ठीक है। सो सिर्फ 6-7 मिनट ही दूर है ये, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, वहाँ से। तो एरिया मुझे अच्छा लगता है, ईडब्ल्यूबी को ना, शांत सा एरिया। ये यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो ऐसे हैं कुछ। तो इस तरफ भी ये ऑफिसेज हैं सारे। एक्चुअली क्या है कि झपकी लगी थी, नींद अच्छी आई, क्योंकि टायर्ड बहुत था, समझ नहीं आया क्योंकि नींद नहीं हो रही प्रॉपरली पूरी। और रात को क्योंकि वहाँ पे भी ध्यान होता है, इंडिया में भी चीज़ें अभी बिल्डअप कर रहे हैं अभी, तो पूरी तरह ऑटोमेट होने में भी 1-2 साल लगेंगे पूरी तरह। अभी तो बिल्डअप करना है, मज़ा आता है काम करने में ऐसे ना, एनर्जी के साथ। यूनिवर्स ही देता है वो एनर्जी। और ठीक है, अब आगे और वीडियो बनाते हैं। हेलो, मैं अभी निकला हूँ बाहर, वहाँ सा बाहर ही आज बॉल एंड who tries to sleep early again। मेरी अच्छा बारिश हो रही है, रुकी थी। मैं ज़्यादा देर कैमरा नहीं भी चलाऊँगा, आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे चलेगा ये यहाँ, बट इन जनरल ये थोड़ा सा है एक्सपीरियंस, शेयर करूँगा जहाँ भी जाऊँगे। देखो जी, रश पूरा है। सो ये यहाँ पे कल्चर है, शाम को लोग आते हैं, निकलते हैं, बियर शेयर 1-2 ड्रिंक्स के लिए खाते हैं और जाते हैं। काफ़ी कॉमन है ये वाला। तो
और मैं भी यार ट्राई कर रहा हूँ ये चक्स जाने की, या चक्स जाते हैं यहाँ जाके कुछ ट्राई करते हैं। हेलो जी, देखो ये चक्स में एक तो मेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे, मतलब ये बड़ी ऑनेस्ट सी बात करूँगा मैं, अगले 5 मिनट ना सीधी सीधी बात करूँगा। यहाँ पे लोगों को हेल्दी खाने का समझ नहीं आता। अरे भाई कोई भी रेगुलर जगह में मैं बोल दूं हेल्दी, घबरा ही जाते हैं। कैलोरीज मतलब एक मील में 800-900 कैलोरी, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। हर चीज फ्राइड, दूसरी हर चीज फ्राइड। मतलब मैंने वो सिजलर भी मंगाया, उसमें सॉस भर के दी थी, एंड वाली सब्जियां थी तेरी पैक कर तू। और भाई मैं क्या बीता, सब्जियां तो पैक तो कर दे, नाल जो तू किलो जड़ी सॉस दी टेरियाकी ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। कहानी ये है यहाँ पे कि मतलब बंदा यहाँ पे मतलब हेल्दी मांग लेता तो ये बेचारे घबरा ही जाते हैं। अरे बहुत खाते हैं यार अनहेल्दी के, हम ऐसे ही हिंदुस्तानियों को बदनाम किया हुआ। ठीक है, हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा गलत खाते हैं, प्रोटीन वगैरह नहीं खाते। अदरवाइज तो वैसे टिंगू जो वधिया है डिवाइस, कितने भी ला जाओ। अदरवाइज नाइस प्लेस यार चक्स। पर लास्ट टाइम भी सोचा सी मैं जाऊंगा, मैं गया, इस वजह से लगे नॉट वेरी एक्सपेंसिव दैट वीक। बट एक प्रॉब्लम है यार, व्हेन यू गो टू अ प्लेस वेयर यू गेट यू नो beer and alcohol, something like this sort, very hard to find places where you get healthy food बड़ा easily। विंग्स फ्राइड है, फ्राइज ਤਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਟੀਨ ਹੈ। ਪੁਟੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਈਡ। The only thing is these guys take a lot of protein। बीफ बहुत खाते हैं ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ नहीं खाते बीफ। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा ਹੁੰਦਾ चिकन हो जाए, मटन हो जाए, लैम हो जाए। So I had chicken, so at least that was the most grilled healthiest thing which I found, and I had that। Beer is very good here, मतलब I would say। एक और रीज़न है, यहाँ पे पानी बहुत सही है, और कुछ चीज़ों में ना क्वालिटी में यहाँ पे लोग खतरनाक है। मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स को लेके, मैं प्रेफर नहीं करता। बहुत रेयर होते हैं जिन्हें खाना प्रेफर करता हूँ, मुझे सही नहीं लगता। मतलब वो ना कहीं मतलब ओवर मसाले वो टेस्ट देने के चक्कर में ख़त्म कर देते हैं न्यूट्रिशन उसमें। मैं पीछे एक दिन ऐसे ही चला गया था, मैंने लिया वहाँ पे किचनर में, जब वो लिया नो डाउट उन्होंने टेस्ट के लिए सब सही किया था, बट खा के साला गला ही ख़राब हुआ। मैं डोसा लिया अपने हिसाब से, और तेल ना भरे हुआ डोसा सी मतलब अब मैंने यहाँ पे चेक्स में भी जब ऐसे बोला कि आई डोंट सी एनीथिंग हेल्दी, तो यहाँ फिर एंड में जो पैक करने भी बोलिया कहते ना ये फॉर टेस्ट। कुड़ी तो अपनी लगती सी, एक्सेंट मारिया सी तो गोरिया तो भी वध। एनीवेज ठीक है यार, आई फाइंड दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, in India we are growing not only financially, not only technology wise, not only overall, but mentally also much faster. I find we are getting evolved. The only thing what we need to focus on is that whatever we do we have to think global, from a global point of view। global point of view सोचेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। और सच में बताऊं, एक अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। कि जब कोई बंदा एक्सेंट मार के बोलता है या गोरी चमड़ी वाला है, तो पता नहीं हमें क्यों उसको फिट इन करने की कोशिश करनी होती है। नहीं ज़रूरत है यार, हम बहुत सही हैं, वो लोग फिट इन करें यार, अगर करना ही है तो। टाइम चला गया वो। जय हिंद। Yeah, now I'm recording. Yes. So yes. Very good friend, Supreet, eh? I'm in Make jail. sure make sure you know this guy. Yes, you need to know this guy. But yes. So I'll just record a small bit with you right now. So
how's life in Canada? Life in this world is very good. So I happen to stay in Canada. My Canadian world, or the world, is my family. What is between me, God, family. So it is all beautiful. Overall, the economy is suffering a little bit. That's a natural process. Once you have 50% of all your eggs in one basket, it is transforming. But it also invites a lot of opportunities where people are aggressively looking at other opportunities, say how we can partner up with things, how we can increase trade from Canada, from inside Canada to outside. So a lot of these organizations are finding opportunities to grow. If you look at the recent news, a lot of trade opportunities between India and Canada, especially in the mineral side, in nuclear side, which means large serious deals are happening, which will invite these ancillary industries to work. And with respect to health, a lot of initiatives are obviously be taken care of. So mental health, physical health, drugs, and whatnot. So again, when large industries are moving things, obviously the industry itself will move. So there's a lot of opportunities. When there is a storm, you can either hold back or just, I believe the best way to tackle a storm is to go walk right into it, so you can come out of it faster, and you'll be the first person to come out of it, so you will have the best opportunity out of it. So I believe we are in very good position if you take this in that positive approach. Otherwise, It seems like a transitional phase. definitely a transitional phase, and it is not going to be a short one. That's one thing. Like people say, hey, this is going to be good in 6 months, 8 months. No, I believe this is the next whole stage of Canada to go beyond. So the next flamboyant phase could take anywhere between 5 to 10 years, but this 2 years are very, very critical on who can do what. So that way I think bells are ringing. So some sign from universe, I guess. But these 2 years are very, very critical in terms of who can do what, how are we going to sustain, and how are we going to perceive this transition. Canada as such, I came to Canada with a dream saying, hey, we want to do something. And I had opportunity to go to Australia, US, Germany, London, US, I said, Singapore, but I chose Canada for the people here. So anybody who's coming here has to understand the culture of here and respect the culture. So there are a lot of immigrants especially did not do that, and it's in bad faith. I would highly recommend not do any. Come to a country and respect the country. I mean, yes, be that person, pick up your trash and do the right thing. As simple as that, right? So You need to follow the rules of the absolutely, country. right? You gotta respect the culture of a country. So I believe that's where it starts, and that basic passion towards the fellow human being is there. I think everything else will follow. What do you think are the biggest don'ts right now for anybody who is in Canada and who wishes to do something in Canada? Don'ts, if we talk about. Don'ts, everybody's talking about AI. So if you have an AI idea, make sure you're deep into the roots, not just developing a feature. So I think we had a conversation just about that. Don't spend cash unnecessarily. Hold your cash. Cash is very valuable. Everything is up for sale now, and I personally believe it will still be a little better moving forward, especially this year. So hold your cash. Don't spend money for no reason. This is a good, amazing time to buy 15 years of your life back at a price. So things are going back to 15 years price. So this is the right time to save money. But also, don't just get stuck with the idea that, hey, this is a small market. This is people don't have money here. People are not spending money. So don't get stuck in that idea. Canada has quality. There's a saying, it's literally true, that if you can deal with Canada and Japan in terms of quality, you are ready to sell anywhere in the world. And this is particularly true in terms of medicine. So if you can deal with Health Canada, if you can deal with the similar department in Japan, and people in health know this, that is the best product to be sold anywhere in the world. So that is Canadian quality, right? For most of Yeah, this is even what I have felt and seen. If a product is of Canadian quality, there's a huge demand across the world as well. 100%. So I would say, don't get stuck inside, say, hey, market is small. No, market is worldwide. We are the best of the best of the best. Go figure out the best of the best of the best outside. The world is wide open, and don't get stuck here. Don't get stuck inside house. Just go out and like
just get some fresh air. It's cold, but it's the best thing you can do. So you don't get stuck inside the house. Don't deal with problems by yourself. Like, there is a community out there, you got friends out there, just go talk to them, spend some time. Sometimes it's good to take a step back, have a coffee with your best friend, like Supreet, and talk. I mean, don't get stuck there, and don't think small. Like, 90% of people are thinking, hey, this is a very bad time, and so contract my my offerings and like come closer to what I want to do, and but 90% of people are thinking that way, which means at least some of your competitors are out of the way. This is the best time to go out and push yourself and set your stage. It will not happen tomorrow. It will not happen in the next 6 months. But when people are ready, you should be the first person they want to call. So 90% of people are not doing it now, right? Because they think the market is not there. But the market is there. It's just waiting for the right person to come and for the time. And do you think there would be a free trade agreement soon with India, like in between India and Canada? Inevitable, right? So every single country across the world, like Europe has done it now. So India has a large spending capacity in terms of middle class, and most of the products any country will make is for the middle class. So, and the middle class will have high quality products demand, definitely a demand there. So it is, I strongly believe it's quite possible. Been a chaos in this show. And it should happen. But, hey, And thank you so much for this small chat. But whatever you have mentioned, it's quite highly valuable, and because you have insights. And before we conclude, Jay, can you just tell something about yourself to everyone? What do you do, and where you're from as well? I would love people to know about that. I'm a enterprise value building person, so I go into a company and get the company's build enterprise value for any business, and specifically in terms of going into market, understanding what your product really has to offer and offer it to the right person, right? So like an old saying, somebody can look at a very old watch and just offer $100, or someone can say, oh, this is an antique piece from 200 years and say, hey, this is worth millions of dollars. So, but people sometimes perceive things and you offer it to the wrong market. So we go in and understand what is really working and where it will really work and where it will be valued the most. So in short, you do the right matchmaking. Not matchmaking, but finding somebody's strength and bringing somebody's strength out of the company and figuring out who will be the most valuable, and finding that right ICP and helping them penetrate that market. Okay. So that's been very successful. We're doing very well in Canada as well as in California. More so, I'm also a part of TIE. I'm the Director of Partnerships at TIE Toronto. Very grateful for the opportunity. Amazing network, hands down, across the world. So if you're an entrepreneur or wish to be an entrepreneur, have a fire, this is a good network to access. It will give you the first meeting. And if you're really good, that should take you to places. Very interesting, very interested in meeting new people, new ideas, people who respect everyone, or people I respect a lot. And I'm also a part of an organization called 90 Million Smiles. We help educate children across the world, specifically in India. We have educated so far 6,232 kids. Wow. So my guru is Dr. Satish Shikha, trying to follow his steps, trying to help the world in whatever small way we can. Love to wake up, talk to God, be humble, and help as many people as we can. I wish you already. And I would love everybody to know that he's from Tamil Nadu, one of my favorite places in India. Oh, very kind. Thank you. Oh, as long as there's a lot of spiritual connection in my opinion. Yes. So come from a very small village. My dad's village still has only 4 buses a day. It used to be 3 buses a day up until 6 years, and then I think it's 4 or 5 buses a day still until today. So can you share the name of? it's called Nahambatti. Okay. It's in Virudhunagar district, close to Arupakottai. So if I can do it, anybody damn well can do really, really, really well. So dream big and take action every single day. So, a famous entrepreneur from India said, how do you lift a buffalo? You lift the buffalo right from the day it's born, morning and evening, without a break. You will be able to actually lift a full-grown buffalo.
So that's your dream. If you're really serious about it, every day, morning and evening, Consistency. you just consistently build and take action. You miss one day, maybe you might fail. So just make sure you lift it every single day, and then 100%. Thank you so much for this brief interaction and your insights. We look forward to hosting you soon in India. Probably this time we are not. It will be not just going to the southern part. We'll be coming to Chandigarh as well, or probably I'll come wherever you are. We'll take you. bring you Anywhere around. you're Supreet. And again, from my side, Supreet is is a very successful entrepreneur. Has done a lot of things, but more than anything, we connected really well in terms of how good a human being he is, how grounded he is, how spiritually connected he is, and how he looks at the world. Well, you can do many things and make money, but he chooses to make the world a better place. And obviously, there is monetary benefit to it. But he also is a person who is enterprising that people who have good ideas, people who add value, should have good opportunities. So he's doing that to various organizations. Look at his profile and you will very well know. But more than anything, he's an amazing person to be connected with. We connected really, really well at a very short period of time. We kept in touch. So I was so excited to realize Supreet said, "Hey, I'm in Canada." I'm like, we are meeting for sure. So we just made time for each other. So thank you, Supreet, for taking this opportunity. Thank you. I'm actually not. I won't be able to sleep, tonight because the kind of words you have said for me. So Please. sometimes I'm like, okay, you're talking about me. Oh, Supreet, you're very, very humble. See, like I said, you're grounded and humble. So I'll share more stories with you. So stay tuned. ठंड बहुत ठंड है यार ते बड़ी थोड़ी देर पहले ठीक सी हाँ ठंडी होके आ गया वेदर वाला going to Mimiko station. Let's see कि ट्रेन टाइप ते फड़ लांगे या नहीं तो 5 मिनट वॉक ही में The yellow emergency strip should only be pressed when medical, police, ठंड बहुत है। transit safety, or fire services ये are भी मैंने needed. मिमिको स्टेशन Or से you can लिया discreetly text help एक रिंग तक जा रहा हूँ 1 घंटा 4 मिनट है यहाँ से और ये बेस्ट कम्यूट ही लग रहा था अभी यहाँ के लिए और टाइम भी और अदरवाइज ऑल्सो थोड़ा सा ये कि मैंने 4 बजे पहुँचना थोड़ा सा 15 मिनट लेट पहुँचूंगा बट मैंने पहले बात कर ली बट ये वो ट्रेन वाला काम बहुत सही है यहाँ पे Vous pouvez également texter le mot au 7 ठंड 777. मैं इस समय पिकरिंग स्टेशन पे हूँ तो मिमिको स्टेशन से पिकरिंग आया था पिकी सारे मैन्युफैक्चर फ्रेंड हैं पार्टना उसके आने जाम बट वेरी गुड मीटिंग और हर चीज़ को टाइम लगता है होपफुली वी बी डूइंग सम गुड बिजनेस नाउ टुगेदर और ये मैं वापस मिलने को जाऊँगा वहाँ से ईटोबी को रिश्ता है और ऋषि में अपन के आज डिनर इन लोगों के साथ एंड फिर उसके बाद रात को जाके कल मॉर्निंग में 1-2 मीटिंग्स हैं मैंने यूएस थोड़े से नए वहाँ के किस्से होंगे ठंड बहुत है भाई बहुत ठंड है बाहर मैं आया हूँ थोड़ा वीडियो मैं क्या बना लें मैंने बनाई नहीं यार कुछ तो दिखाते हैं फिर मैं